तो अभी हम लोग ने हमारे घर से चेकआउट कर दिया है एंड अभी हमने हमारा उबर बुक किया है। तो उबर के बाद आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है जहाँ पे हम जा रहे हैं। बहुत भारी सरप्राइज। बताया नहीं हमने? नहीं, कहाँ बताया? सरप्राइज है, बहुत बड़ा सरप्राइज है। थोड़ा नर्वस हूँ वो सरप्राइज के लिए, बट आई थिंक विल बी एबल टू मैनेज। कलर विच कलर डू यू वांट? ऐसा लग रहा है क्या चाहिए गाड़ी? ये क्या सही सीन है यार। गाड़ी चूज करनी है, हम कोई भी गाड़ी ले सकते हैं। इंशाल्लाह हमने ये गाड़ी चूज की है 786 and boys are going to play well. Asnen, we have chosen 786 and boys played well. मेरा स्टीयरिंग क्या है? अच्छा इधर है। भूल गया। अच्छा ऐसे सनरूफ वनरूफ है यार, तो ड्राइव करना, बाहर जंग निकलूंगा मस्त। वाओ दिन भूख लगी है? अच्छा तो हम पिंक्स चले। हॉलीवुड लेजेंड सिंस 1939। भूख तो लगी थी, वो तो मेरे को पता है, बट ड्राइव का एक्सपीरियंस कैसा था? अरे भाई क्या बोलते, आगे संभाल लेंगे? 786। तो अभी क्या खा रहे हैं अपन? हॉट डॉग। बहुत अनहेल्दी है बट बहुत यम्मी भी है। लिया मुंह में सॉसेज। नितिन टेकिंग सॉसेज इन हिज माउथ। So guys, पीना पड़ेगा। हाँ बोला ना, कुछ बताना चाहते हो? कहाँ पे आए हम लोग? हम आए हैं आज यूनिवर्सल स्टूडियो। हाँ। नितिन एक्साइटेड? क्या जाग रहा है? ओके चलो गाइस, गोइंग फॉर द एंट्री। सिंगापुर। अबे सिंगापुर नहीं बे, ये है यूनिवर्सल स्टूडियो LA, द वन इन हॉलीवुड। अच्छा यूनिवर्सल स्टूडियो हॉलीवुड। वेलकम। Jeez, I know. This is so weird, just being quiet like this. This is so odd. Hi, girl. The name alone strikes fear and would be intended to ensure your safety. But should you ever find yourself in danger? Excuse me, in my grocery morning, if you stay much longer, you find yourself listening to Professor Binns go on about history of Hollywood. Which should be pointed out is rather fascinating. Am I supposed to make all it? Am I not talking last night, no less? Listen, dear, I scored a winning goal in the 1862 That's made and isn't proofed for all you willing to. ओके नितिन, कैसा था हैरी पॉटर राइड? यार आई थिंक अभी तक का बेस्ट है। अब तो एक ही राइड किया, बट as per the website also this is the best ride। मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे। और अभी ये क्या पी रहा है? बियर दिन में ही चालू हो गया तू? बटर बियर। दिस इज बटर बियर। व्हाट द फक इज बटर बियर नाउ? हैरी पॉटर का गॉड, आइसी This सोडा is है। brilliant. कोक फ्लोट है, कोक फ्लोट। ये बटर बियर। चले नेक्स्ट राइड पे। चलो नेक्स्ट टाइम को जुरासिक पार्क करना है यार। जुरासिक पार्क देखते हैं जो रास्ते में आएगा सब करेंगे यार। तो आज मैं इसको सब राइड्स करा के ही रहूंगा, एक भी नहीं छोड़ेंगे। ओके लो ब्रो, क्या बोलता है? अभी हम जाने वाले हैं इधर का नंबर 1 राइड, जो देख भीड़ ऑलरेडी बहुत हो गई है यहाँ पे। 60-minute ride. It is apparently the number 1 ride in Universal Studios. This is called the Studio Tour History.
जो जैसे पहले पुराना राइड्स हुआ करता था वैसा कुछ इन अ लाइव वीडियोस भी रिकॉर्ड कर पाएंगे तो आपको दिखा पाएंगे। यस सिम्पसन राइड किया हमने, हाँ, वो भी वो अच्छा था, नॉट एज गुड एज हैरी पॉटर बट गुड। यस यस। यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड्स पे कि यू नो अगर वॉशरूम जाना है तो जाओ, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ 60-minute लॉन्ग टूर. So yeah, let's see. The rides And are make about sure to you have a start. pair of 3D glasses with you. Yes. If you don't have 3D glasses, just raise your hand up in the air. Hold your hand raised. We're gonna leave the theme park for just about 45 minutes to an hour, and we're gonna explore a real-life movie studio. Here to the right, you can see a little sneak peek. We make movies, TV shows, commercials, music videos, all sorts of productions here on the lot. Now, like I said, my name is Mariana. I'm going to be your guide, but I do have a co-host today. You might recognize him from The Tonight Show. His name is Jimmy Fallon. We opened our studio lot right here on March 15th, 1915. The studio tour started 61 years ago on July 15th of 1964. That's when we started. Over here to the left is construction for our roller coaster, Fast and Furious Hollywood Drift. It should be ready in 2026, and it looks like it's going to be a lot of fun, so we're getting really excited about that. This is a real fire station. We have our very own zip code in Universal City, so we do have our own fire station. Now, right now, we are in between the theme park and the movie studio. So on the right, that is the back of Super Nintendo World. At the very end of Taylor Swift's Wildest Dreams music video, she is standing in front of a theater. That theater is right here in our Metro sets. And that same theater was used by Jungkook for his 7 music video. A lot of music videos have been filmed in our Metro sets. Billie Eilish, Justin Bieber, Eminem, Lady Gaga, Pink, even Michael Jackson all filmed music videos 2 years left. So I think that's really cool. Now, do you guys want to know a secret about these buildings you're seeing? They're not real. These are what we call facades. A facade is just the front and sometimes the side of a building. And even if you see these like open doors, you can see there's not really anything going on inside, right? So we use our Metro sets just for exterior shots. We only really film out here when we want to be outside. It's the original King Kong that made me want to direct movies. मजाक कर रहा है But if you look around, you get to see what a real soundstage looks like when we're filming a production inside, right? We have the big camera and the... Oh no. Everybody hold on. And for the rain, we use something that honestly a lot of y'all are probably pretty familiar with. You might have them in your front yards. We have them up high on poles. Sprinklers. Shoot the water up in the air, let it fall. It looks just like rain. That is our flash flood put in place back in 1968. That is over 10,000 gallons of water. Don't worry, it gets reused or recycled for every tram. Now, from one iconic director to the next, we are entering the crash site from Steven Spielberg's 2005 film, War of the Worlds.
The airplane crash site set is a perfect example of a set that is all designed around You forget to sit down to talk about Florida already. That's why. What if the 747 goes down right in a big neighborhood? Because it's just something you don't see. You're doing good. You're doing good. Because of me. Listen, I want you to close your eyes, okay? Now close. This is Jupiter's Claim, a nostalgic, small-time Southern California amusement park owned by former child star Ricky Jr. Park. Ding 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 ding. Let's do Mario.